वी आर गोइंग टू, हम लोग सब रिवाइज करेंगे अभी जो सेकंड मिड टर्म के लिए। तो सबसे पहले तो है ये 5 फिल्टर, 5 फिल्टर टू मार्केट वैलिडेशन। Very important. You need to make sure that you know these stuff: unmet need, big opportunity, sustainable competitive positioning, scalable business, and why us and why now. और दूसरा जो है बैलेंस। बैलेंस क्या करना है? तुला है, राइट, तराजू है वो, तो तराजू बैलेंस होनी चाहिए। और तराजू के एक तरफ है टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट, और दूसरी तरफ है कंप्लीटनेस। देख रहे था ये, यू कैन सी दैट, राइट? दिस इज दिस हियर इज द टाइम टू मार्केट, एंड दिस हियर, दिस साइड हियर इज द इज द कंप्लीटनेस। तो आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आपने बनाया है, एंड एंड यू हैव फाउंड आउट कि कब इसको हम मार्केट में ले जाएंगे, किस समय ले जाएंगे। और दूसरी तरफ है कंप्लीट, कितना वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। सो आपने सुना है और आपने पिछली क्लासों में सीखा है कि आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं पहले। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जब बन जाएगा तब वो आप प्रोडक्ट आप दे सकते हैं कस्टमर को, कस्टमर को इवैल्यूएट करने के लिए। वो है आपका प्रोटोटाइप टाइप का। ओके। तो टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट एंड कंप्लीटनेस, ये दोनों चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल के एक तरफ टाइम टू मार्केट है, दूसरी तरफ है कंप्लीटनेस। अगर अगर ठीक समय में मार्केट में आप नहीं जाइएगा तो यू विल लूज, कंपटीशन वहां पे चला आएगा, जो यू मे नॉट गेट एडवांटेज, आपके सेल इतनी अच्छी नहीं होगी। Maybe you may not be able to open your business market, मार्केट में और किसी और दूसरे कंपटीशन ने आके दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड द मार्केट। सो टाइम टू मार्केट बहुत जरूरी है। और कंप्लीटनेस, आप किस समय, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कितना कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज में हम लोग इंप्रूव तो हमेशा करते रहते हैं, करते रहते हैं किसी भी चीज में। हम लोग हर कोई ना कोई उसमें एडवांटेज, कोई ना कोई नई चीज अपने प्रोडक्ट में बना सकते हैं। लेकिन कब रुकना है वो, कब ये कहना है कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमने बना लिया है और ये मार्केट में जाएगा प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो टाइम टू मार्केट और दूसरी तरफ है कंप्लीटनेस। और फिर पहला फिल्टर जो है, विल गो जस्ट इन लिटिल बिट डिटेल। पहला फिल्टर है कि अनमेट नीड। ऐसी कौन सी अनमेट नीड है, अपरिपूरित जरूरत, जो कि जरूरत है और वो जरूरत पूरी नहीं हुई है, ऐसी कौन सी चीज है, वो हम लोग को, दैट्स द फर्स्ट फिल्टर इसका है। तो ये पहले तो है कि किसको, किसको जल्दी है, किसको चाहिए ये प्रोडक्ट एकदम अभी, किसको चाहिए, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। और कौन सा ऐसा मार्केट सेगमेंट है जिसको कि ये इसकी जरूरत है, कौन सा बाजार का वह खंड है जिसे आपके उत्पाद, आपके जो भी आप सेवा दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी एकदम परम आवश्यकता है। और मार्केट में किस किस को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आपके प्रोडक्ट की किसको जरूरत है, हु नीड्स दैट प्रोडक्ट, यू नीड टू नो दैट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तभी आप कस्टमर ढूंढेंगे, तब कस्टमर बनाएंगे, और फिर आप तभी कस्टमर की नीड को और थोड़ा टेस्ट करेंगे। अपने हाइपोथेसिस जितने भी आपने बनाए हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और फिर कस्टमर से इनपुट लेते रहेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको प्रोडक्ट का आइडिया दिया है जो आपको, क्या ये आपको सही लगता है, क्या इट विल मीट मीट योर नीड। और
और जब आप कस्टमर से ये बात करते हैं और फिर अगर कुछ पहले कस्टमर बोलते हैं हाँ हमें ये जरूरत है, तब आप और किसी कस्टमर से भी पूछिए। हो सकता है ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनको कि वही चीज जरूरत है। और जब ये ऐसा करते हैं तो आपने यू हैव क्रिएटेड अ मार्केट सेगमेंट। के यू हैव क्रिएटेड अ मार्केट सेगमेंट। तो दूसरा फिल्टर है बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप एक दो चीज तो नहीं से एक दो क्वांटिटी में नहीं सेल करेंगे। आप तो हजारों हजारों की क्वांटिटी में सेल करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कितनी बड़ी मार्केट है। क्या आपकी जो मार्केट है, अवेलेबल मार्केट है, वो क्या करोड़ों करोड़ों आइटम्स की है, या मार्केट एकदम सिर्फ लिमिटेड उसमें है। अब जैसे अगर अगर कोई कहे कि आप चंद्रयान बनाइए। अब चंद्रयान की मार्केट तो बहुत कम है। आप गिन सकते हैं कि कौन से देश ने चंद्रमा पर अपना स्पेसशिप भेजा है। तो वो तो मार्केट बहुत कम है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। सो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इज देयर एन अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी है। देख रहे हैं ये आदमी, ये आदमी देख रहे हैं कि इसने देखा ओ हीरे अब बहुत अच्छा है आजकल। सो मे बी आई विल फाइंड आउट हीरे की खान में खोद के कहाँ हीरा मिलेगा। अब वो उस हीरे को ढूंढने की कोशिश करता है, और ये भी देखता है कि वो कितना हीरा मिलेगा, कितना उसका साइज होगा। ही इज ट्राइंग टू लुक एट दैट। तो बिग अपॉर्चुनिटी, ये जानना जरूरी है कि ये अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। ये जानने के लिए ये जितने भी डेटा, बहुत से ना ये जितने भी बहुत सी मैगजीन निकलती हैं जो कि बतलाते रहते हैं, एनालिस्ट जो है, जो एक्सपर्ट है, वो लोग डेटा छापते रहते हैं कि भाई अभी इस ये अगले एक साल में आपको अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हैं तो इतने कंप्यूटर आपकी जरूरत है, इतने कंप्यूटर की मार्केट है। सो वो डेटा आपको यू हैव टू डू अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन वो डेटा आपको मिल जाएगा, वो सब डेटा रहता है। ओके। साइज ऑफ द मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट है। तो साइज ऑफ द मार्केट कैसे बोलते हैं, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो एक है टैम, TAM, टोटल अवेलेबल मार्केट। टोटल मार्केट, पूरे कितना बड़ा है एक ही जो मार्केट है, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, जो कैटेगरी का प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। सबसे पहले वो। दूसरा है सैम, उस मार्केट में सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट कौन सी है। राइट। अब जैसे मार्केट तो सब जगह है, लेकिन हो सकता है किसी जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, किसी जगह इंटरनेट नहीं है, किसी जगह और कई जो चीजें हैं, बिजली, ये पावर नहीं है, ऐसा कितनी कितनी जगह हो सकती है। तो तो कहीं कहीं पर सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट नहीं है, बट यू कैन फाइंड आउट जहां पर है। और फिर आपने तो पहले तो हुआ टैम, टोटल अवेलेबल मार्केट, फिर दूसरा हुआ सैम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। सो वो टैम के अंदर है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि टारगेट मार्केट। तो मैं अपनी टारगेट मार्केट मेरी कौन सी होगी। सो यू लुक एट दैट टारगेट मार्केट। और फिर उसके बाद अंत में योर इनिशियल टारगेट मार्केट, क्योंकि यू आर अ स्टार्टअप। तो आप देख, और आप हर जगह तो बेच नहीं सकते हैं। अगर आपने स्टार्टअप की है यहाँ से, रांची से, तो आप अगर बेचना चाहेंगे बॉम्बे में या दिल्ली में, तो उसमें तो बहुत बड़ा खर्च आएगा। एक एक तो नेचुरली आपको ढूंढना है अपने लोकल एरिया में। अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि लोकल एरिया में इजीली आप उसको लोकल नीड को आप पूरी करें, और वो लोकल नीड के लिए प्रोडक्ट बनाएं। ओके।
सो ये जो चार्ट है, जैसे साइज द मार्केट, तो एक जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द मार्केट। तो ये पूरा जो है ये देखिए टैम है। टैम मतलब टोटल अवेलेबल मार्केट। पूरी मार्केट इतनी है, दैट्स इट, इसके बाहर और कुछ नहीं, इतनी पूरी मार्केट है। और फिर इसी टैम के अंदर देखिए सैम है ये सैम का क्या मतलब हुआ? सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। कि कौन से ऐसे कहां पर है ऐसे कस्टमर जहां के आप जा सकते हैं, कौन है, कौन है वो कस्टमर, कहां पर है। और उसके बाद अगला है उसके बाद आपने वो किया, देन यू गो टू टारगेट मार्केट। सो पहले टैम हुआ, फिर टैम के अंदर आपने उस मार्केट को और डिफाइन किया, वो सैम हुआ। और सैम को और डिफाइन किया, उस सैम के अंदर टीएम, टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी। और फिर उसके बाद आप अपना जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में स्टार्ट किए, तो आप उसमें बोले आपकी इनिशियल टारगेट मार्केट कौन सी होगी। तो आप कह सकते हैं ओ मेरी इनिशियल टारगेट मार्केट, अगर इस चार्ट को फिर से देखें, टोटल अवेलेबल मार्केट, लेट अस से पूरा पूरा विश्व है। सैम सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, मैं हिंदुस्तान में, भारत में मैं उसको कर सकता हूं, दैट्स अ सैम। देन टारगेट मार्केट मैं झारखंड से हूं, तो मेरी टारगेट मार्केट होगी यूपी, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, और आसाम, उड़ीसा, ये सब टारगेट मार्केट हो सकती है। और फिर उसके बाद आईटीएम, इनिशियल टारगेट मार्केट। तो आप देखते हो ओ मेरी टारगेट मार्केट हो सकती, इनिशियल टारगेट मार्केट पहले झारखंड में करूंगा। रांची में मेरा बेस है, तो मैं झारखंड में अपना प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर ढूंढूंगा झारखंड में। और फिर उसके बाद झारखंड में जब मेरे को कस्टमर मिल जाएंगे, तब उसके बाद मैं एक्सपेंड करूंगा टीएम, टारगेट मार्केट, दूसरे आसपास वाले प्रांतों में। तो उस तरह आप बढ़ाते हैं, तब क्या होगा कि नहीं तो अगर आप बहुत जल्दी बढ़ेंगे, तो आपको जब मार्केटिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि यू विल रन आउट ऑफ मनी। एंड बहुत सी कंपनी उसीलिए फेल करती हैं कि दे गो एंड दे ट्राई टू एक्सपैंड वेरी फास्ट। ओके, सो टैम टैम के बाद सर सैम, सैम प्रेजेंटेशन के आपका बाद स्टॉप हो गया है सर। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट के बाद सर आपकी प्रेजेंटेशन आपका शो नहीं इनिशियल हो रहा टारगेट। सर ओके, स्क्रीन। सो अब साइज ऑफ द मार्केट आपको कैसे पता चलेगा? वेयर यू विल गेट द सोर्स ऑफ डेटा, है ना। आपको चाहिए टोटल अवेलेबल मार्केट कितनी है। एक तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, यू नो व्हाट कैटेगरी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज, है। तो बहुत सी जो रिपोर्ट्स, जो ये गार्टनर रिपोर्ट और ये इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये सब बहुत सी रिपोर्ट हैं जो कि बतलाती रहती है। या अपने जैसे झारखंड में अगर आप देखेंगे, झारखंड में गवर्नमेंट के पास जाके किसी भी जिस भी कैटेगरी में आप करना चाहते हैं, तो आप उससे रिपोर्ट पूछेगा, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि अगले 5 सालों में झारखंड में क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ होगी। चाहे वो चाहे वो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे वो अप्लायंसेस में हो, तो इट विल गिव यू दैट रिपोर्ट। तो ये जो आप सबसे पहले तो आप कितना भी बाजार, कितना कुल उपलब्ध बाजार टैम कितना है, ये आपको पता चल जाएगा वो रिपोर्ट देखने से। और सेवा योग्य उपलब्ध बाजार कितना है, वो भी पता चल जाएगा। और उसी से और फिर आपका अनुमानित बाजार हिस्सेदारी कैसी होगी। तो विश्लेषक डेटा और प्रतिनिधि मॉडलिंग करने से आपको ये पता पड़ लेगा। प्रतिनिधि मॉडलिंग उसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी बना रही है क्या, उसी कैटेगरी की, तो दैट बिकम्स योर
प्रतिनिधि, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी मॉडलिंग। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये वो उस कंपनी ने ऐसा किया है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो यू विल हैव दैट डेटा, एनालिस्ट डेटा, प्रॉक्सी मॉडलिंग। और फिर उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू कितनी होगी आपकी, वो भी उसी तरह से। ये एक तो एम्पेरिकल डेटा मतलब अनुभाविक डेटा, अपने उस विद एक्सपीरियंस डेटा। सो अगेन ये जो जितने भी रिपोर्ट्स जो निकलती हैं, एनुअल रिपोर्ट जो निकलती है, यू कैन गेट दोज रिपोर्ट एंड यू कैन रीड दोज रिपोर्ट एंड यू कैन फाइंड आउट कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में बनाना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट क्या है, उसका वो कितना उसमें के, हाउ मच दे आर सेलिंग फॉर, कितनी उसमें मार्जिन है, प्रोडक्ट कैसा रिलायबल है, ये सब चीजें उसमें आपको पता चल जाएगी। We already talked about this TAM, SAM, target market and initial target market. थर्ड फिल्टर है कि क्या आप में सस्टेनेबल कंपैरेटिव पोजीशनिंग है क्या, कि आप हमेशा आपका प्रोडक्ट हमेशा हमेशा कस्टमर से आगे रहेगा, कंपटीशन से हमेशा आगे रहेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपका प्रोडक्ट आगे रहेगा। तो आपकी प्रतिस्पर्धा कौन है, क्या है, आप बेहतर क्यों हैं दूसरे से, आपका अनुचित लाभ क्या है। अनुचित लाभ मतलब हुआ कि आपका कैसा कोई पैटेंट है, आपका ऐसा जो जो सर्विस आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस आपका है, वो इतना इट इज पेटेंटेड, उसका पेटेंट है आपके पास, right? क्या अगर आपके पास उसका पेटेंट है तो दूसरा वो कर ही नहीं सकता है। अगर करना भी चाहेगा तो दे हैव टू पे यू मनी। तो इसका यही हुआ कि आपकी अनफेयर एडवांटेज क्या है। और जितना आपके पास पैटेंट होते हैं, उतने आपकी कंपनी की वैल्यू, स्टार्टअप की वैल्यू उतनी बढ़ती है। एंड देन कैन यू, और फिर उसका क्या आप इस लाभ को बनाए रख सकते हैं, कैसे, कैसे हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में कि कैसे एप्पल हर साल नया प्रोडक्ट निकालता है, हर साल, और नई नई चीजें उसमें निकालता है। करीबन 100 डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि बना रही हैं स्मार्टफोन। एंड सो यू कैन बाय अ स्मार्टफोन विच इज ऑलमोस्ट लाइक एप्पल, विच इज 10 times cheaper than the Apple. But still, Apple Apple makes lot of money. क्यों इतना चार्ज कर सकते हैं वो? दैट्स बिकॉज दे हैव दिस एडवांटेज। क्या आप ऐसी एडवांटेज अपने प्रोडक्ट में कर सकते हैं? बी डिफरेंट कर सकते हैं, श्योर, बी डिफरेंट। अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए, उसको तेज बनाइए, और उसको मेक इट सो दैट प्राइस कंपेरेटिव हो। चौथा फिल्टर, चौथा फिल्टर वो है कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल, कि बिना ज्यादा खर्च किए हुए आप क्या और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस महीने आप अगर 100 यूनिट बनाते हैं, तो बिना ज्यादा खर्च किए हुए आप अगले अगले महीने 1,000 यूनिट बना सकते हैं। सो जो स्केलेबल हुआ, यही मतलब हुआ उसका कि जितनी ज्यादा यूनिट बनाएंगे, तो आपके एम्प्लॉय जो असेंबल करें उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। जब एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, दे विल डू द वर्क फास्टर, दे विल डू द वर्क more reliably, the quality of the product will be high. So that will be an advantage. And when all these things happen, that means your cost will go low. So so you can, that's how the company, that's how the scalability of the product, scalability of the product is there that इस महीने आप 100 बनाएंगे, और एक महीने बाद आप उसको 1000 बनाए, 1,000 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि आपने नया प्रोसेस किया है, आपने नया टूलिंग किया है, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर मच बेटर ट्रेन। सो, और फिर आपको ये देखना है
कि आपने एक तो जब शुरू में किए तो यू फाउंड अ कस्टमर सेगमेंट, और अब आप क्योंकि स्केलेबल कर चुके हैं, सो और कौन कौन सा सेगमेंट है, डिफरेंट नए सेगमेंट में, क्या आप नए सेगमेंट में और जा सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को आप कहाँ ले जाएंगे और क्या करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, किस किस चीज में ये प्रोडक्ट शुरू होता जैसे जब इंटरनेट आया था, इन इट वाज ओनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द शेयरिंग द डेटा, टुडे इंटरनेट इज यूज इन एवरीथिंग, everything. Look at what Amazon has done. Look at what faced the all the other the all the other media social media has done. Whether it's a Facebook, whether it's a Google, whether it's a YouTube, see what they are doing. Okay, so you have to see what you're doing. और पांचवा फिल्टर जो है वो है कि why अस, हम ही क्यों अभी, और और फिर क्यों इसी समय, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, यू हैव वर्कड ऑन, यू हैव डिफाइंड द कस्टमर नीड, यू हैव डिफाइंड the customer segment, you have defined the customer product, you have already gone through and you have done the customer validation, आप कर चुके हैं, and customer acquisition आप कर चुके हैं. So that's why you are, and you know the product, you have that you have that knowledge base, you have a domain knowledge, उस प्रोडक्ट के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, और आपने टीम बना ली है, राइट. एक टीम के सदस्य जो कि सब में जुनून जो है वो वैसा ही है, सब में वैसा ही जुनून है, और ये जरूरी होना चाहिए टीम में. क्या टीम के पास डोमेन नॉलेज है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, मेक श्योर दैट टीम हैज, एवरी मेंबर ऑफ द टीम हैज दैट डोमेन नॉलेज. So let's move on to the next one, which is the exponential growth. Exponential growth देखते हैं हम, तो future is much faster than what we think, और हम ये देख रहे हैं अपने जीवन में, आप लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि एक क्लास में ये शेयर किया था कि फ्लोरोसेंस जब बल्ब निकला था, इन्वेंट हुआ था, उसको प्रोडक्ट बनने में 82 साल लगे, 82 years. और रेडार को 46 years लगे, और टेलीविजन को 34 साल लगे, सॉरी, टेलीविजन को 29 साल लगे, जिपर को 34 साल लगे, ट्रांजिस्टर को 10 साल लगे, और वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, इसको सिर्फ 11 महीने लगे, जबकि लास्ट वैक्सीन जो मम्प्स के लिए थी 1963 से 67 में, उसको 4 साल लगे थे. देखिए कितना, कितनी तेजी से ये काम हो रहा है, डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहा है. तो ये क्यों इतना ये तेजी से, व्हाई इट इज, व्हाई, व्हाट कॉजेज दिस डिक्रीज इन लैग टाइम फ्रॉम इन्वेंशन टू प्रोडक्ट. ये जो क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है, एक तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, वेरियस टेक्नोलॉजीज, हो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेटलर्जी टेक्नोलॉजी हो, जो भी टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी आपस में आपस में मिल रही है. और तो वो, और दूसरा दूसरा जो है कि हमारी डेटा डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिट एंड द स्पीड एट विच द डेटा इज बीइंग एनालाइज्ड, डेटा की एनालिसिस करते हैं, वो स्पीड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो दैट इज व्हाट द मेकिंग द एक्सपोनेंशियल स्पीड हो गई है. तो उसीलिए ये जो कोविड का बना, इसीलिए बना कि सब जगह, पूरे विश्व में हर जगह से डेटा ले रहे थे,
कि आज यहाँ पे क्या हुआ, आज यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये दवा दी तो उसका असर क्या हुआ. All these was recorded real time on the daily basis, and it was processed. That data was being processed here in US, and that's why this the vaccine actually came out so fast. So the exponential growth. What is fueling exponential growth? Exponential growth को दो चीजें फ्यूल कर रही हैं. एक तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, और दूसरा है द पेस ऑफ गेटिंग द डेटा एनालाइज्ड. And you can see that the company which played a major role in this is Nvidia. Nvidia just because of their GPU, graphical processing unit, they were able to process huge amount of data in a very minimal time. I want to talk about the BMC, business model canvas. तो बिजनेस मॉडल कैनवस के देर आर 9 components, नाइन ब्लॉक्स है. पहला ब्लॉक है वैल्यू प्रोपोजिशन. तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या करता है? इट आइडेंटिफाइज कि कस्टमर की अनमेट नीड जो है वो क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, और वो कस्टमर को सॉल्यूशन दे रहा है, विच इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होती है, कस्टमर को उससे लाभ होता है. तो दैट्स व्हाट दी दैट्स व्हाट दी वैल्यू प्रोपोजिशन डज. और दूसरा है कस्टमर सेगमेंट. और तो जो जो कस्टमर सेगमेंट है, uh, वो ऐसा सेगमेंट जो कि अनमेट नीड है एंड दे वांट योर प्रोडक्ट. आपने जो बनाया प्रोडक्ट, जो आइडेंटिफाई किया प्रोडक्ट, आपने जो सॉल्यूशन बनाया आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अनमेट नीड, उसको और किसको किसको चाहिए. तो जिस जिसको चाहिए दैट बिकम्स ए कस्टमर सेगमेंट. वो एक कस्टमर सेगमेंट हो गया. और फिर चैनल. आपने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट कैसे जाएगा कस्टमर के पास, कैसे आप उसको भेजेंगे. क्या वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ताकि इंटरनेट से चला जाएगा? क्या वो हार्डवेयर प्रोडक्ट है, फिजिकली इट हैज टू बी शिप्ड? Will it go by train? Will it go by plane? How, or by bus or the truck? How it will go, or by ship? Or product, but the information also, information about the product. वो कैसे कस्टमर के पास जाएगी? कैसे कस्टमर को पता चलेगा कि जो झारखंड के बच्चे जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो वो कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का फायदा क्या होगा? दैट्स द कम्युनिकेशन. ऑल ऑफ दैट. और फिर उसके बाद जब कस्टमर आपका सामान खरीद लेता है, हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट दैट कस्टमर. कि वारंटी वारंटी कुछ हुआ तो आप कैसे उसको सपोर्ट करेंगे. कोई सवाल हुआ, एप्लीकेशन में कुछ सवाल हुआ, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे. कस्टमर वांट्स टू ऑर्डर अगेन मोर पार्ट, हाउ इजी यू विल मेक so that you can customer can order easily. Payment कैसे. So all of these things are comes under the channel. And then the customer relationship. कस्टमर रिलेशनशिप से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर से अगर आप रिलेशनशिप ठीक रखेंगे तो कस्टमर आपको फिर रिपीटेड ऑर्डर देगा. कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि यू आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग कस्टमर with a value to the customer. Value proposition आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं. And that's why customer is making money, and that's why customer is happy. You need to make customer happy. और फिर सर्विस. कस्टमर ने ऑर्डर किया तो कितने जैसे ऑर्डर किया उसे कितने दिन बाद कस्टमर को प्रोडक्ट मिला. Because customer is going to sell that product to somebody else and make money. So how fast it will be? Customer has a question. How fast you or your startup
went and addressed that question. कोई कस्टमर ने प्रॉब्लम ढूंढी जो कि उस प्रॉब्लम को आप कितनी जल्दी एड्रेस करते हैं. सो दोज आर ऑल कस्टमर रिलेशनशिप. और इसमें क्या होता है कि इफ यू डू अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप यू विल हैव अप स्केलिंग. अप स्केलिंग का मतलब हुआ कि कस्टमर ना सिर्फ खुद आपको ऑर्डर देगा, बट कस्टमर अपने नेटवर्क में भी कहेगा कि ओ, ये झारखंड के बच्चों ने जो कंपनी स्टार्ट की है ये कंपनी बहुत अच्छी है. सो दैट इज द कस्टमर रिलेशनशिप. फिर उसके बाद की रिसोर्सेज. आपको क्या क्या रिसोर्स की जरूरत है. अब की रिसोर्स आपने ऑलरेडी यू हैव डिफाइंड the business model, right? Remember the very first thing we did. Uh, what is the startup? What is the purpose of startup? Purpose of startup is to find a business model which is scalable, which is repeatable, scalable, and profitable. That's what it is. So वो उसको बनाने के लिए टू मेक अ बिजनेस मॉडल विच विल बी रिपीटेबल स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल. व्हाट डू यू नीड. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको मैन पावर की जरूरत है, आपको फाइनेंस की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, आपको पेटेंट की जरूरत है अगर किसी दूसरे का पेटेंट यूज करना है. सो दीज आर द थिंग्स. व्हाट आर द रिसोर्सेज यू डिफाइन कि आपको रिसोर्स क्या क्या चाहिए. एंड देन व्हेन यू से रिसोर्सेज मींस ना हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट टू गेट दोज रिसोर्सेज. Whether you want to rent it, whether you want to buy it, what is your reasoning, how you are going to make it. Then key activities. आपने प्लान बनाया है. प्लान बनाया है आपने. आप यू हैव डिफाइंड दिस बिजनेस मॉडल. और बिजनेस मॉडल में ये हाइपोथेसिस कर रखे हैं ये काम करना है. These are the key activities which you have to do in order to for the company to make a product, for the company to be repeatable, scalable, profitable. Right. So those key activities. Then key partnership are those businesses or consultants who will help you in achieving the target for the business model to succeed. अब जैसे this good example है मारुति makes car. And Maruti के कार में चाहिए टायर. So they buy the tire from a tire company. So the tire company is a key partner of Maruti. Same way, when you do your product, there will be many things which you, if you are making a hardware product or even a software product, जो कि somebody else will develop the software for you, somebody else will develop the hardware for you. So those are the key partners. And then the cost structure. This will describe कि कहां पर खर्च हो रहा है कितना पैसा. That it will do. It will describe that. And then it also identified what is the cost of customer acquisition. क्योंकि आप जाके कस्टमर के पास गए, यू वेंट टू द कस्टमर, यू शोड हिम द सैंपल फर्स्ट. और दो तीन आदमी आप लोग गए एक कंपनी से, ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर, और चार पांच ट्रिप लगाने पड़े. सो देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व देयर, राइट. सो तो वो कितनी कॉस्ट लगी टू गेट द कस्टमर एक्वायर्ड, हाउ मच इज दैट. एंड देन यूनिट कॉस्ट. अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो 100 यूनिट बनाने में आपका कितना खर्च हो रहा है, तो एक यूनिट में कितना खर्च हो रहा है ये आपको डिटरमिन करना है. और फिर उसके बाद जब 1000 यूनिट बनाएंगे तब एक यूनिट का कितना कॉस्ट होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ दे you will know how much to sell that product for. That's how you will know that how much money you are making. And then the last is, and so you have to know the fixed cost and the variable cost both.
दैट्स हाउ यू डू, दैट्स हाउ यू विल नो कि आप कितना खर्च कर रहे हैं. अब फिर लास्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम. रेवेन्यू ये स्ट्रीम दिखाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू और किस टाइप की रेवेन्यू है. तो रेवेन्यू दो टाइप की है. एक तो है कि एसेट सेल. एसेट सेल का मतलब वो है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं. एंड देन दैट प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, एंड इट इज अ वन टाइम सेल. इट इज अ वन टाइम सेल. अब जैसे अगर टेलीविजन खरीद रहे हैं, आप टेलीविजन जो खरीदते हैं, दैट इज अ वन टाइम सेल. राइट, जाके आप पैसा दिए, आपने एक टेलीविजन खरीद दिया, उसको बोलते हैं वन टाइम सेल. और दूसरा कि आप उसमें यू वांट यू वांट जैसे कोई प्रोडक्ट में, ये सॉफ्टवेयर में है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चाहिए. अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चाहिए, यू विल बी पेइंग फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस. There's a license fee which you pay for use for every year or every quarter or every month. That's what you do. So उसको बोलते हैं recurring revenue. तो दो टाइप की रेवेन्यू. एक तो वन टाइम रेवेन्यू विच इज एसेट सेल, और दूसरी है रिकरिंग रेवेन्यू, जो कि लाइक लाइसेंसिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सो दीज आर दी बीएमसी. ये बीएमसी के 9 ब्लॉक्स जो है ना, इनको आप एकदम समझ लीजिए. समझ लीजिए. बहुत वो ये बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल. जैसे पांचों नीड, फर्स्ट 5 needs we talk about, those are fundamental. Those The market, the SAM and the TAM, and the target market and the initial target market, those are the fundamental of building the team. How would you build the team? That is the fundamental. Okay. And then BMC, हर block जो है, that is a fundamental. You need to know that. Then one thing which all of you were there, you all got to listen to Mr. Aditya Kumar, an entrepreneur from his. He founded a company called Panjar Renewable, and he is in the energy renewable. That's what his company is. So he started his story is, I just wrote that down, and all of you have that copy actually, that he started his company, and what he did was, he first he really uh, wanted to help his villagers. उसका जो गांव था वो थोड़े से पहाड़ के ऊपर है, और वो देखता था कि कैसे जो उसके फादर हैं या उसके रिलेटिव हैं, कैसे बेचारे सामान पहाड़ के नीचे से ऊपर ले आते हैं, साइकिल के ऊपर रख के, और वो साइकिल को पकड़े पकड़े ऊपर ले आते हैं. बहुत मेहनत लगती थी. तो उसी के मन में था कि मैं कुछ करूंगा. और जब उसने इंजीनियरिंग पास की, तो he converted few of the bicycles to a EV, electrical bicycle. और इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल साइकिल बना के, he and then he saw how it is benefiting the people, how he's meeting the unmet need. And then he realized, oh, बाइसिकल बनाने में तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू मेक इन लार्ज वॉल्यूम. इफ द प्राइसिंग ठीक करना है उसको, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन द टूलिंग. And so he said, okay, really, that's not what I want to do. I have learned. In the meantime, he did his master's in the renewable energy, and he learned about the solar cell and solar application.
And so he started the company. He said, "Let me do the solar installation." At that time, in Bihar and Jharkhand, there were not too many solar panel installers across the state. और जितने भी they were installing the plants which are higher than the 50 kilowatt. और फिर उसके बाद छोटे 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 जो प्लांट थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। और फिर उसके बाद जब जो 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 छोटे प्लांट लगाए उन्होंने, उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं था। सो आदित्य सॉ दिस अपॉर्चुनिटी that between the plant installation of 50 kilowatt and lower, that is the market where he has got a niche market there, which where he should be working. And so he went into and captured that niche market. And also what he did was he also started doing the maintenance work on the solar panels, solar installation, solar plants, जहाँ की maintenance वो the company who installed, they were not able to maintain it. So he started doing these things, and he did very well, and he raised some funds, and his company was evaluated at that time 1.6 crores. Or what he did was, so he needed about 40 lakhs, about that amount. So he raised that money, and so after the he got the money, his company, his post valuation of the company was over 2 crores. Then what happened was, by last quarter of 24, the competition in the solar installation, grew very fast, because it was simple, and there were a lot of youngsters who are going into this, and so the margin actually started going low, and it was about 20% now, and 20% margin is not a margin which is sustainable. You have to have a much bigger margin. And so with that, he said, "Okay, what should I do?" And he went and talked to almost like 1,500 farmers, and because he had to go and talk to the customer, what their needs are. He got to find out the unmet need. और उन कस्टमर के साथ जब गए, 1,500 फार्मर के पास गए, so he defined that how many, what is their need, and in the solar panel, what is the need, and he came up with the need that they need the distiller, they need a dryer, uh, the fruit dryer, and they need a tiller. So he specifically came with like 10 different applications which could be used. And he came and he pivoted. He pivoted his company from just a service company, which was a service company of installing the software, installing the solar panel, to the product company, where he started making the solar appliances. So that's what he did, and then he's doing quite well, because he got grant from Jharkhand University. He got grant from Bihar government, which has been approved. And initial funding he got from his friends and family. Plus, after that, he got the funding from the two alumni organization of B.I.T. Sindri, that is B.I.T. Sindri International and B.I.T. Sindri
North America Alumni Association. So, very short story, but this is very interesting what it has done. Okay, now what we want to talk about, just a little bit from the legal side. लीगल साइड में कि जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे आप उधार लेना चाहते हैं, डेट का मतलब वो उधार, यू वांट टू गेट सम फंडिंग, यू वांट टू गेट सम फंडिंग, तो तो आपको फंड कैसे मिलेगा? तो डेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो टूल है, दे कॉल इट डेट इंस्ट्रूमेंट. by that lack of the term, they just wanted to use the instrument. So मतलब ये हुआ कि there's a you have to take in easy term, ये है कि आप कंपनी से, आप बैंक से लोन ले रहे हैं या किसी और इंडस्ट्री वाले से लोन ले रहे हैं. That's what it means. So you have to, debt instrument is a tool to raise capital, raise additional capital funds. Okay, and then you, of course, you have to have a specific contract, उसके लिए बनाना पड़ेगा, and then you have to have a binding obligation कि भाई आप ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ द लेंडर एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज गेटिंग द फंड्स, दोनों की अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वेरी क्लियरली डिफाइंड, ऑब्लिगेशंस आर क्लियरली डिफाइंड कि भाई कब ये पेमेंट करेंगे, अगर इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन एंड फोर्थ, एंड ऑल दी, अगर पेमेंट नहीं आई तो कैसे होगा. सो एंड द फोर्थ इज रीपेमेंट मेथड स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो रीपेमेंट, आप रीपेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड, और अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो हाउ इट विल बी हैंडल, ऑल दोज थिंग्स आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट. स्टार्टअप, अ कंपनी, a जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज व्हाट इन देयर टर्म, व्हाट डज स्टार्टअप मीन. जब वो बोलते हैं स्टार्टअप, सो स्टार्टअप का मतलब हुआ कि स्टार्टअप कैन बी ओनली फॉर द फर्स्ट 10 years. अगर आज आपने स्टार्टअप स्टार्ट की 2026 January 1st, तो आप सिर्फ 10 साल तक, 2035 December 31st तक आप स्टार्टअप का दर्जा आपको मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा. सो इट्स ओनली फॉर 10 years. दैट्स वन. 10 साल के बाद आप, यू विल नॉट बी स्टार्टअप, सो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ अ स्टार्टअप आफ्टर दैट. और दूसरा है, अगर आपकी टर्नओवर किसी भी समय 100 करोड़ से ज्यादा हो जाती है आज सालाना, एनुअल जो, अगर 100 करोड़ से ज्यादा चली जाती है, देन ऑल्सो योर्स, इट वोंट बी अ स्टार्टअप. तो दो कंडीशन है, राइट. एक तो स्टार्टअप की कंडीशन जो है, एक तो है कि इट हैज टू बी 10 years, ओनली अप टू 10 years. उसीलिए कहते हैं स्टार्टअप, स्टार्टअप इज अ वेरी शॉर्ट टर्म कंपनी. इट्स नॉट फॉर एवर, इट इज फॉर द वेरी लिमिटेड टाइम. सो 10 साल तक. और दूसरा जो है, जो टर्नओवर कंपनी का अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो देन इट कैनॉट बी अ स्टार्टअप, इट कैनॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप. देन टाइप ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप दो चीजें हैं. एक तो है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप, इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स पार्टनर्स. मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी फेल करती है, तो उसकी सारी लायबिलिटी जो है वो जनरल पार्टनर पर है. तो अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट की एंड इट इज जनरल पार्टनरशिप, एंड आपने किसी से पैसा लेके कोई डेट फाइनेंसिंग से अगर पैसा लिया है एंड यू आर नॉट एबल टू पे, देन यू आर लायबल टू पे दैट, जनरल पार्टनरशिप.
और दूसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो ओनर हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इट इज डिफाइंड कि आप सिर्फ जितना भी लगा पैसा है, जितना नुकसान हुआ, सिर्फ उसका 10% ही आपको देना पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट नंबर, आई एम मेकिंग अप दैट नंबर। या जितना नुकसान हो उसके सिर्फ 50% ही आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। So I just wanted to share with you these things today, and just making sure that whatever I have covered, this is what we covered in last 4 weeks, and I just picked up mostly the points which are key, which are important to you in the sense that which you will be learning, and it'll be useful to you. Yeah. So now I would say if you have any question, you can raise your hand, and Professor Roy or myself, we will recognize you. And actually, I'll request Professor Alam Yes, sir. to identify जो भी raise कर रहे हैं, and you can recognize them and have them ask the question. Okay, sir. I will unmute them, sir. And Professor Suresh Roy, would you like to comment something on what we went through? Yeah, thanks for unmuting me. I think that was the gist of what are the most important requirement for a startup. And अगर आप ये सब key terms को याद रखेंगे, the chances are that you are going to approach your startup in the most logical manner. So again, very well summarized by Professor Saab. Thank you. अगर Thank आपके पास कोई भी question है, please raise your hand and we will address them. Professor Alam, take over, please. Yes, sir. स्टूडेंट्स कोई भी सर हैंड रेज करते हैं तो मैं अनम्यूट कर दूंगा सर। कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है सर। हाँ, शिवम राज सर, हाउ डज द हाई डेट अफेक्ट कैश फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स? Okay, let's see. Can you repeat that question, please? It's not. Sir, question was, sir, how does high debt affect cash flow and decision making in early stage startups? Okay. So this question, startup का मतलब ये क्वेश्चन है कैश फ्लो के बारे में है मेनली, right? This is a okay. So there are three things actually. This I'll be teaching in the next class. So really about the finance part of it. लेकिन कैश फ्लो का मतलब हुआ कि क्या आपको कंपनी रन करने के लिए डे टू डे आपके पास पैसा है कि नहीं है। आपको नेक्स्ट वीक आपको एम्प्लॉय को पे करना है, आपने जो सामान खरीदा उसको पे करना है, तो क्या आपके पास पैसा है कि नहीं है। अगर आपके पास, तो वही वही आपके रिक्वायरमेंट क्या है। सो यू हैव टू प्लान इट कि हर महीने या हर हफ्ते आपको कितने कैश की जरूरत है, एंड दैट यू हैव टू प्लान। और फिर अगर कैश फ्लो कम, और उसमें आपको यू हैव टू अरेंज फॉर दैट मनी, whether when you do the
the fundraising of just say the Aditya, what Punjab Renewable did was they went and they said this is what our valuation of the company is, and we want to raise this, and for that we are going to give this percentage. That's how they raise the money. So they had to do three things. Number one, for that raising, and is that financial statement, profit and loss, and the cash flow. So I don't want to talk too much about this right now because ये अगली class में करेंगे. This we want to focus on what we have covered up till this point. So Sudhir has raised hand. Yes, please. Yes, Sudhir. You can unmute and ask your question, Sudhir. सर मेरा ये डाउट था 10 ईयर वाला जो बता रहे थे आप लोग स्टार्टअप 10 ईयर के अंदर ही मतलब जो शुरू होगा उसी को स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा जो 10 ईयर से ज्यादा हो जाने पे स्टार्टअप कंसीडर नहीं होगा Sudhir, can you? I think, let me answer that. Yeah. According to the government of India, for doing any startup, you have to apply for the startup license. Mm-hmm. And startup की कई advantage government की तरफ से भी मिलती है. And these advantages expire after 10 years. So it's not that key, like in the United States, you just go and do your startup and, you have one day license to start doing a business. वहां पर government आप evaluate करेगी and only then they will grant you a startup status. Got it? Did you get it, Sudhir bhai? Sudhir? Yeah. So, Professor, I have one question. If you share your slide and go to slide number 11. Okay. Share it again and go to slide number 11. Yeah. और उसके अंदर बोला गया है, what's your unfair advantage? So I don't think the word unfair really goes for negative side. Yeah. Number 11, slide number 11. Yeah, I'm going to 11. ठीक है. 14, 13, 12. Yes. Yeah. Okay. The point 2 is, what is your unfair advantage? Yeah. Okay. I think the very word unfair is very unfair. I think the right word should be, what is your competitive advantage? Yeah. So that is the term which is unfair is used because if the company has a patent, then nobody can use it. And the company, nobody can use it. So that's not unfair, right? That's not unfair. That is what is fair. Well, no, but that's a term. Yeah, it's not fair and fair. It was a term which was kind of coined. So it's anyway, not. I really think that what is your competitive advantage? अगर आपने अगर कोई patent discover किया है, and you're using that is your competitive advantage. That's not unfair advantage. Yeah. That's just my opinion. Yeah, but that's okay. See, what happens is if there's a patent, you can decide not to give it to anybody. Right? You can say no. I don't so want that to is an advantage. Why is called unfair advantage? Oh no, because because it is only you. You are the one. A monopoly, right? It's like from that the term came out. No, from it's not monopoly. That's the advantage. That is okay. That is exactly what every industry needs. Okay. Is their specialty, something that they have come up with. Yeah, your point is well taken. But yeah, that's good. Okay.
All right. Any other thing? Anybody else? Any comment on the on what we on any question you have? That's what I like to answer today. A question in chat box, sir. Pawan Kumar, how can we determine if our idea is just a good idea or if it actually has the potential to become a profitable business? Professor Roy, you want to address that? Then I'll Oh, yes, take. yes, I will address that. And very interesting. Just yesterday, I was reading one of the article, and just in the month of July, 450,000 applicants have applied for to start up their company. 450,000 in 1 month. Imagine the level of competition that is there. And I'm sure the same thing in India. India में जो startup जिसको बोलते हैं, forget about that because most probably they are already established companies. But for you to start a company right from the scratch is, again, you have to go to your customer and find out an unfulfilled need of the customer. और उसको आप कैसे translate कर सकते हैं into a product, and if that product is also applicable on a wider scale. That means not only you're within your locality, but आप जैसे grow करोगे, that is how you'll be able to take advantage of. So again, you have to make sure that your design is good and your design is scalable. तो ये दो चीज अगर आप याद रखोगे, along with the 9 items that is in business canvas, अगर ये याद रखेंगे, you will have good advantage and knowledge of what to do and what not to do. So in any case, customers discovery तो आपको करनी पड़ेगी. You must go and find out the unmet need of a customer. Pawan, was that the answer you're looking for? Okay. Anyone from the startup ecosystem in Jharkhand? Chandan, you asked the question. So are you asking the students, or what was the idea of asking that question? Anyone from the startup ecosystem in Jharkhand? So agar aap isko clarify karenge, we'll be able to address it better. Wasim Akram, how to know, sir, which company is the best for investing our assets? No, do not invest in stock at this particular time till you understand what it is. Aapka paisa is better if you keep it with you and in the bank right now till you really understand how to invest in market. Rahul, what is the right approach to find funding? The right approach is obviously once you have developed a product, once you are trying to make a proto, that is the time to go for funding. And the easiest funding is go to your friends, go to your relatives, because initially requirement is very less, and that is from where you can get your funding. Once your product is made, once you have a working prototype, that is when you can go to investors, because investors really want to see what is in your hand. So इनमें से कोई भी, if there's a follow-up question, please do so. I will respond to that. Sumit is asking, what could kill this company even if we do everything right? And what is the role model plays throughout the journey as a startup? They are low moments and they are innovative.
Absolutely, absolutely. Startup is always a risk. Remember, it is not a short thing. It's not that a target आपने मार दिया बीच में and you get full points. It's a tough competition that's going on. आप अपने प्रोडक्ट को जो आप निकाल रहे हैं, आप इंटरनेट में देखिए who are making those products and you'll be surprised कि कितनी नॉलेज, कितनी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर. But that does not make us not doing anything that is unusual. इसलिए बोलते हैं customer requirement. Before the customers start going to other sources to find a solution for their product, you should be the one that you should go to the customer. But in order to do that, make sure you have the right team. Make sure there's a word that I always use. Your key to success is your knowledge, your experience, and your expertise. If you're not expert in what you are trying to build, the chances of your success will be very low because you will be guided by other ideas which you don't understand. And most probably, they will also misguide you into doing something which you do not know. So three things, experience and expertise. ये सब मिलती है once you start working. अगर आप expert है, you can start your business today. Absolutely. And I'm sure a few of us are already on their way to develop their product or startup. Lekin most of you, I would say 100% of you will become an entrepreneur once you start working in an industry, because there also you have to come up with something different to make the product better, faster, quicker. And that is what is startup also. So no matter where, जब आप experience लेंगे, the chances are you will come to know what is the right technology to use, convergence of technology, Professor Saab ne बताई. What are the right equipments that you should have in order to test the product that you're doing? Number three, what are the additional manpower that is required? And you don't want any manpower that you know of, but you want expertise in their own field to come on this project. जितने expertise आएंगे, the chances of a success will go up. I will just leave it at that क्योंकि आंसर बहुत लंबा भी है. Okay. Say, one other I want to add, Sumit had asked about the moral. What role morale plays throughout the journey? एक तो, when you enter into entrepreneurship, one thing is very clear कि आपको एकदम पूरा पारदर्शित होना है, क्योंकि टीम के साथ आपको पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि every member of the team has to be passionate and has to know exactly what the other team members need. What we talk about empathetic leadership, कि कहाँ उसके दूसरे टीम मेंबर की कहाँ खूबियां है और कहाँ that person may need help. So ये जो मोरल तो हमेशा अप रहना चाहिए, because otherwise कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए. अब अगर उदासीनता होगी तब तो द कंपनी इज नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल, बिकॉज द स्टार्टअप इज ऑल अबाउट startup is all about the dreams, all those hypotheses what you have determined, जो कि किसी और ने प्रूव नहीं किए हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट. तो मोरल तो हमेशा हाई रहना चाहिए, पॉजिटिव भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. ओके, what could kill the company even if we do everything right? And what role? Okay, what could kill the company? Well, it's very difficult. एक कि जितने भी लास्ट उसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने किया था, what are the 20 points which actually company fails?
One of the major ones is एक तो there are not of money. Other is time to market, वो ठीक नहीं है. प्रोडक्ट जो है, जो बना रहे हैं, it is not just the MVP. You make the product which you think what the market needs rather than make the product which really market needs. टीम आपस में टीम जब नहीं मिलती है, that is the biggest, that kills the company very fast. The relationship between the funder, आपके जो फंड करते हैं आपको, relationship between the management and the investor, that is very very important. और फिर pivot, अगर गलती किए हैं, suppose we did it and and you recognize it as a mistake, then it is better to pivot as soon as possible than just sitting on it. Because if you pivot, you are not wasting any more money. You are just going and working on another productive work. So those are some of the things which you have to look into it. Don't spend even a single penny. Don't spend even a single penny. Think 5 times before you spend it. I would add one more thing, is collaborate. If you know someone else is doing a similar product, Beautiful. if Yes. you are able to collaborate, the chances, although you might give up 50% of your company, but the chances of your success increases multifolds. And there are also chances sometimes a larger company will just overtake you. They'll kill you. They'll just buy you out and kill your product. And that is very common in Silicon Valley. Okay. Wasim Akram, your question, actually, I didn't see your question. All right. Mohammed Mehtab Alam. You said, what problem do startup usually face? Okay. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्टअप में होती है ना, वो है कि the identification of the problem, कि प्रॉब्लम क्या है. So if you can address that, कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, ना अपनी नजरों से नहीं, कस्टमर की नजरों से प्रॉब्लम क्या है. That's what you have to understand. We engineers are kind of we learn the things, either it is pass or fail, it is right or wrong. Somehow we do not get into this gray area. जबकि जितना भी हम लोग काम करते हैं, चाहे डिजाइन भी कर रहे हैं, it is not just the perfect item, बल्कि there is some gray area where you say, okay, this is what we agree on. तो उसमें ये हर चीज, don't be a perfectionist, but be provider of a product which customer needs. Okay. Just want to add one line, do not be me too company. वैसी बहुत कंपनी है, और अब you want to go after the same market, being just another company is not good. Yeah. Okay. How can we determine if our idea is just a good idea, or if it actually has the potential to become a profitable business? Okay. ये बहुत बढ़िया सवाल है. Professor Roy has addressed that earlier too, but I will also tell you. आइडिया अच्छा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब लोगों से आप बात करेंगे. और आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है. आइडिया डज नॉट हैव एनी वैल्यू, क्योंकि आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू
आपके दिमाग में कम से कम 50 आइडिया रोज आते हैं, राइट? 50 आइडियाज इफ यू स्टार्ट राइटिंग डाउन कि मैंने क्या सोचा, क्या आइडिया। तो लेकिन लेकिन आइडिया तभी वैल्यू बनता है जब उस आइडिया पे आप सोचना शुरू करते हैं, उसके सॉल्यूशन पे सोचना शुरू करते हैं, ये सोचना शुरू करते हैं कि इसकी किसको जरूरत है, ये सोचना शुरू करते हैं कि ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। दैट्स व्हेन द आइडिया बिकम्स ए गुड आइडिया। सो अगर कोई कहे, अगर कोई ऐसा कहता है ना जो कि ओ मेरा आइडिया बट रियली आई डोंट वांट टू शेयर बिकॉज somebody विल स्टील दैट आइडिया, it's not worth it. That means, your idea is not worth. If you cannot share your idea, it is not worth anything. Okay. So that's okay. Uh, I will just add one more sentence to that, is repeatability. If you are not able to repeat, that is, if you are not able to meet your own specifications, the chances of success is very low, because there is a lot of variability in the product, either at the design stages or at some other stages. A product becomes manufacturable only if it comes into scalability mode. That is, a product meets all the repeatability targets, and then it can be manufactured not at one location, but at multiple locations at the same time. So repeatability is very, very important. yeah. Okay. All right. Very good. Okay. Then I'm just saying, and Professor Roy addressed this, but Chandan, that's your question is like anyone startup ecosystem in Jharkhand. Again, he has asked you that what is that question mean actually? Is it for you? Why did you ask that question? Because sure, you go to Jharkhand University, they have a ecosystem. They have a incubation center. Go to BIT Sindri, they have an incubation center. Go to your own institute. The Even if you go to Bokaro, Professor Alam's college, they have an incubation center. So you got to be a little bit more specific in asking your question, so that it can be addressed correctly. Okay. So yes, your answer is anyone from the startup ecosystem. Then we are. Both Professor Roy and myself, we work with all these. All these incubation center, very deeply and working there. So if that was your question, you can ask that question. Okay. Next, how? Professor, can I add a sentence here? Sorry Sure, for that. sure, sure, sure. आप लोग के college में there is a lot of competition events that are being held. And any entrepreneur, that is a first sign of your being entrepreneurship. If you are able to go and compete, winning is not important at this time, but going and competing in those competition, that will give you knowledge, that will give you extra edge next time when you compete, and how you should be prepared to do that. कोई भी entrepreneur, until unless you don't go to this competition and compete, यहाँ पे तो आपका subject is already described, problem is already specified. All that you have to do is work on that problem and produce something. Okay. So thank you. That was a very good point, actually. And then I'm just going through that. And next, Wasim, you had a question that how to know, sir, which company is the best for the investing our assets. It's not quite clear. Are you an investor? When you say our assets, are you an investor? You want to invest the money,
or you are asking for some other companies to invest in you? So if you can clarify that, then I'll take it to the next one. Then Rahul said that what is the right approach to find funding? Okay, right. So fund कैसे करेंगे? Right? The person, the investor, what investor are looking for, कि अगर हम आपको 1 रुपया आज देते हैं तो आप 3 साल के बाद आप मेरे को 10 रुपया देंगे वापस, समथिंग लाइक दैट, राइट? कि 10 गुना, कम से कम 10 times. सो दैट्स व्हाट दे लुक फॉर. तो what is the approach for finding the funding? So what you do is, आपको क्या चाहिए, ये आपको प्रूव करना है कि मेरे पास I have defined a problem. I have a set of customers who have that problem. I have a solution on the paper for that particular problem. I have a purchase order, or I have a MOU from the customer who will buy who will buy the prototype if I give them a solution. जब yes, a team, I have a team, very important, I have a team which does all of this, right? तो 9 blocks जो हैं, 9 blocks of BMC, go and और हर ब्लॉक में वो हाइपोथेसिस होगी आपकी. And once you do that, then that is the time, that is how you approach. वो लेके, and then you make a, you go to the you find out and you make a presentation to the in your, what Professor Roy said, go to the local schools, अपने colleges में, जहां पर भी कंपटीशन आज तो कंपटीशन बहुत कुछ होते रहते हैं, आइडिएशन कंपटीशन, पार्टिसिपेट इन दैट ideation competition. And winning is not the ultimate goal. Your goal is कि अपने जो प्रेजेंटेशन है आप उसको और शार्प 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 करते रहिए, so that you become a best presenter. Can you imagine what will happen if you are able to present? You become a very good storyteller. People will listen to you. Not only people, but industry who come for campus interview, they will definitely listen to you. Right, if you yeah, have a good story to tell. Yeah, absolutely. Okay. What we talked about is how should start a balanced CAC and customer lifetime. Oh, okay. This is a Shiva. तो कस्टमर CAC मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, और लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है, कस्टमर लाइफ टाइम मतलब कस्टमर से आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना प्रॉफिट होगा आपको उससे. सो जो जितना भी प्रॉफिट होगा लाइफ टाइम में, that should be more than, much more than what you have spent the money in customer acquisition. That is the criteria of the success, actually. Okay. Then there's one, key resources in BMC. Naveen, you asked key resources in BMC. Okay. So की रिसोर्सेज मतलब कि ऐसा कौन सा रिसोर्स चाहिए जिसके कि आपको जरूरत है, बहुत जरूरत है, जिसके बिना यू विल नॉट सक्सीड. जैसे कार में अगर टायर नहीं होगा तो कार ही नहीं चलेगी, right? That's it. So those are the key resources जो कि which you need, and जैसे funds, you will need the funds. That is a resource. You may need the funds to for the tooling, अपने equipment tool बनाने के लिए.
So you have to uh, जो की रिसोर्सेज हैं, एक तो की रिसोर्सेज देर आर फोर। एक तो है कि क्या सामान चाहिए। यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, बिजली, वो सब चाहिए। यू नीड द पीपल, टीम चाहिए आपको, राइट? यू नीड द फंड्स to run the company. You need the funds. So those are all the requirement uh, which are which are essential for the company to run. और अगर आप देखेंगे तो यू कैन डिटरमिन योरसेल्फ कि भाई मेरे को कंपनी सक्सेस करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो Can I say a short story? Sorry, can I say a short story? The company that I used to work for, Solar Latex, they were in the business of making a device that would enhance the production of uh, solar cell, increase solar cell capacity by 15%, because many of the companies or people have old solar cell that produce 250 watts, for example. And now with this technology, you could enhance that by having a gain of 15% more. It was proved in our lab that yes, you can do 15% gain. So very exciting. So here is one of our financier. He comes along and says, number one, you do it, it has to be verified by a third party. Because yeah, in the lab you can do it. Where is the third party who is going to certificate that? Give a certificate. And when we went to the third party, at the third party, sometimes it's 15%, sometimes it's 5%, sometimes 6%. So investor came back and said, sorry, you say according to your spec, it is 15%, but in reality, it varies anywhere between 5 to 15%. That is not what is repeatability process. Hence, we will not give you funding. So friends, remember that, many a time these financiers will require a verification from a third party. And number two, you must be able to meet your specifications. We were able to meet our specifications only in the lab environment, not in the real environment by the third party. So next, Sagar, your question is very good actually. You ask what separates founder who build one successful startup from those who build multiple. तो जो मल्टीपल स्टार्टअप जो करते हैं ना, they get real time lifetime experience every time they do a startup. The variable is different, and so they learn with the experience. So you will find that there are serial entrepreneur one after another, who work from one company to one startup to another startup. And so you will find mostly successful ones. Actually, in Silicon Valley, it's very common. And rarely you will have one person who runs everything. Just even in Silicon Valley, you can see one person. You say, like Stephen Jobs, right? He was Apple founder. He was one person stayed with the company. They took him out of the company, but then again he was brought back. Larry Ellison, his company. He has been running one company for a long time. That's he has been successful. Bill Gates, same thing he did. So, but then they have run lot of multiple companies behind the scenes. All of these people, they have done a lot of companies behind the scenes. And so my the single company जो है उसमें, because they have they get the limited experience,
And this, as for example, Larry Ellison, that's the company may be Oracle, but my God, it's not a single focused product or company. They are in multiple area. So it is, you have to identify really. Are you talking about single product? Say single person, single product running that, or you're talking about multiple products, multiple opportunities, right? That's what Stephen Jobs did, right? It's a single. It went from one product. We are showing one product, which is a. He started with the Macintosh, and that changed. Now you have an iPhone, you have an iWatch, you have a iPad. So look at how many product are there. Okay, so At the same time, we can also take the example of Elon Musk, right? that's right. Yeah. Not only he has easy a very successful Tesla company, but he has next company is going IPO, which is SpaceX. Yeah. Then there is Hyperloop. There's a boring machine, and Yeah. then there is a medical company. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, Yeah. which is going to put wiring in your brain. Yeah. So yeah, there are some individuals who are successful in no matter what they do. And of course, PayPal was the one in which he really made his first jackpot. After that, he started Tesla. And now the robots are coming out. Tesla robots are coming out, which is going to be a big market. Okay. So well, I'm just how can startup manage risk? Kindly I think they suggest. should raise their hand and ask questions now. Hmm? They should raise their hand and ask questions. Yeah, there are a lot of questions right here, Suresh. Those are Professor Roy. This is a yeah. What's yeah? That's if they're still there. Uh, so Mohammed Mehtab Alam, are you there? Can you ask that question? How can startup manage risk? I would like to hear that actually. If you are there, Professor Alam, please unmute Mohammed Mehta. Yeah, just in the question asked here, if you're there, please raise your hand. अगर क्वेश्चन वाले नहीं है तो whom should we answer that? Okay, but it is I think Suresh, Professor Roy, there are about 10 more questions, so I think it will be beneficial for everybody who are there. A very simple question. Okay, let's for example, this how a founder will manage relationship between their team members. Very important. पैशन होना तो बहुत जरूरी है कोई भी टीम मेंबर्स में रहे और relationship is not it's all about it is about your quality, what you are producing, what you are doing. It's not just a relationship is not the it is a relationship is you have the passion, you have the capability to do it, and a job is assigned to you, and you got to finish that job, or and then work with the other team members. You cannot be in a isolation. स्टार्टअप में कोई भी आइसोलेशन में नहीं काम कर सकता है अगर आइसोलेशन में काम है कोई ये करता है तो दैट इज नॉट अ टीम मेंबर And फाउंडर when I was involved in EV car startup company,
जो डिजाइन इंजीनियर था, ही वॉज अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड, और वो सब कुछ अपने हाथ से करता था. ही यूज्ड टू डू वेल्डिंग, कटिंग, सब कुछ. I mean, so you must have that practical Yeah. experience in order to do things. Yeah. Okay. And imagine a professor working like a, I should not say labor, but Yep. almost that. You have to lie down on the floor to do all the welding and cutting and screw tight करना, and car का आप सोचिए ऊपर नीचे side सब जगह जाकर करना पड़ता. That is whom I took my inspiration and said, if a professor can do that, I can do it too. I used That's to right. help Yeah. him all the time. And I told him that, Professor, I want me to be your best technician. Very good. Yes. Okay. So, Prince, your question is how can entrepreneurship contribute to economic growth and employment generation? So, one entrepreneur, one startup company that will support 50 employment for 50 people. Now, 50 people और हर उसके पीछे अगर दो भी आदमी है, so that means it's supporting 100 people. So you can see what effect the entrepreneurship does. I was reading one of the data, again about US. They say 65% of the employment is given by the startup in last 15 years. Today, that is a statistical data. जो 15 साल से जो भी कंपनी स्टार्टअप हुई है in USA, they are providing 65% of jobs Yep. to people. Okay. So Sumit has a very good question. How can you lower the coordination cost of the team members such that the organization can execute efficiently? Can you please share your past experience about this? How you can lower the coordination cost? It's not, I think he's talking about not the coordination, he's talking about their salary. And I can just tell him that, we worked in so many startups. Unless there is not funding that is provided, most of the employees in the startup, they work without pay. That means they're contributing their time, technology to the company without getting any short-term return on that. So आपको भी team members ऐसे चाहिए who can sustain themselves for extended period of time without getting any compensation. I have done that multiple times. So आप भी ऐसे member चुनिए, and most probably whoever can sustain themselves means they are good entrepreneurs and they have deep pockets to sustain themselves. So Sagar has another interesting question. That is, if execution matter more than the ideas, why do we still see great execution fail in the market? So you can execute the best thing, the best way, but it has to be a right thing what you are executing, and that's why they fail. That's why they are not doing the right. See, the what they are doing, they are doing the things right, but doing the things right is not, that is a execution part. No, you have to do the right things. That is the difference. That is the reason why you focus so much in doing the things right rather than doing the right things. I hope. I mean, if you really take those 20 reasons why the startup failed,
I'm sure you'll have a pretty good idea because all of this, what we are talking, is already included there. But I can tell you my personal example. I used to work for Cisco System, and there was a company known as Lucent Technology. They were in switches for telephone. This is 1998, 1999. Our CEO says we like to be like Lucent because Lucent, if the Lucent is at 100, at that time Cisco was at 5 or maybe less on scale. But Cisco did something right. And within 3 years, I'm not exaggerating this, within 3 years, Cisco became 100 and Lucent became less than 10. So no matter how well Lucent would have executed, the chances are, if you don't keep an eye on the competition, what competition is doing, you're going to fall on your back sometimes. That's what happened to Lucent. So, Sagar, your comment is, I really like your comment, what you wrote, that we can see the example of BlackBerry. Absolutely excellent company, but it just within very shortly it just went up. And to the same thing, we saw Kodak. Kodak is was such a huge company with the leadership in the in the photography, and they were the first one who made the digital camera. But somebody out there in the management, they did not think that that was of value, and so they kept it back in the back burner, and thus and pretty soon all the others came out, and the company really kind of course went bankrupt. That's just very sorry that even after having all the team, having the all the all the marketing, uh, having the product, and still not succeeding, right? That's a prime example. And same thing happened to Sagar. You have pointed out very well कि वो जो the BlackBerry did not they too much relied on their old, when they put the keyboard on on their on the BlackBerry, that was good, that was okay for a little while, but then when the Apple came, and all the other phone came, they just did not touchscreen, they did not adapt to that. They just they didn't see the market, they didn't see the consumer data, and that's why they lost. I just see that, many times I cross that building where where the BlackBerry headquarter was, and of course now it belongs to somebody else. But it's a very sorry situation. Okay. Okay, and then here, okay, Sagar, good, good. Okay, last is that Shivam Raj, sir, I have a doubt. If we start a startup in the future and it faces heavy losses and it shuts down, how should we restart? And what categories should we follow? Okay, what you are saying, Shivam, what you are saying is that you you're saying you started a company and it failed. Now, why heavy losses? Why the heavy losses are there? What is the reason for that heavy losses? Because you did not pivot? Is that what the problem is? The example for us that, Aditya's example, Punjab Renewables, if you'd have stayed just in the solar panel installation, he would have lost his money. But he pivoted, he says, found another market. So it is just
uh, a startup, when the startup fails, it is the company which is failing. It is not you as a founder have failed. What you have done, you learned if under you the company lost a lot of money, you learned, you analyze. If you're smart, you learn, analyze कि क्यों फेल किए, क्यों इतना ज्यादा मैंने खर्च किया. So in the next you'll be able to companies, you are smarter now and you will do better. Okay. All right. Very good. So I think we are done. And thank you so much. And I just so want to just want to give final comments. please Uh, do that our and then we'll close. our Okay. director was here, in the Silicon Valley, and we had taken him to multiple companies just to show, how our college has evolved and how their alumni are doing in the industry. And the evening we had a dinner with him, and one of alumni says, "I want to arrange for dinner in my house." I said, "Okay, very good." So we invited about 30, 40 alumni who would come down for dinner and have a chat with our director. Uh-huh. तो उन्होंने अरेंज किया in the garage. He had a 3-car garage which cleaned up and arranged everything. And my introduction to Director Saab was, "Director Saab, it is the garage in which most of the Silicon Valley starts. So your lecture coming here is in most appropriate place. And if you can say something right, if you can tell a good story, the chances are you're going to be successful in the garage." Yeah. So most of the companies start in the garage. And I'm sure most of the companies in India too, you may not have a garage, but they all start on a napkin somewhere where you plan out and execute. Before I close, Professor Mahmood Alam, thank you so much. Truly, truly appreciate your help. You have been the Welcome, sir. support of this program, and admire your involvement right from day one till today. And thank you so much. And I hope uh, I hope all these attendees, I hope you got something out of it, and I wish you all the best. And I'm sure you will do well in your exam.